धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस बात को पिछले करीब 8.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बड़ी पहचान रखने वाले भारत के कई बुद्धिजीवी लगातार कह रहे थे, जिस बात को पिछले करीब 8.5 साल से देश की कई राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से उठा रही थी, जिस बात को पिछले करीब 8.5 साल से कई पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिख रहे थे और देश को बता रहे थे कि न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है, न्यायपालिका डर में काम कर रही है, न्यायाधीशों पर एक डर हावी कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आरएसएस के जनसंघियों का, उस बात को लगता है अब स्वीकार कर लिया है देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी सरकार के आने के बाद से ऐसी स्थिति पैदा होने की कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरीके का बयान उन्होंने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में दिया और कहा है कि जिला अदालतों में बैठे हुए जज आज जघन्य मामलों में जमानत देने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले दिन उनको निशाना बनाया जाएगा। उनका यह बयान उस समय आया है जब लगातार न्यायपालिका पर सवाल देश के अंदर से और देश के बाहर से खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिला अदालतों के जज जो है जमानत नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जमानतों का अपील का अंबार लग गया है। अकेले सुप्रीम कोर्ट में 2000 जमानतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 3000 ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, 13 महज अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर रोजाना वहां सुनवाई की जाए और अदालत 10 जमानतों पर सुनवाई करे तो सिर्फ रोजाना 130 की सुनवाई होगी और उससे ज्यादा का अगले दिन वहां पर आकर ढेर लग जाएगा। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत ही चिंताजनक बताया। कैसे DY चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे को उठाया, उससे पहले मुझे लगता है उनके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। DY चंद्रचूड़ अभी हाल फिलहाल में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। यूयू ललित उनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो रिटायर हो गए और ये 2024 के आखिर तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन्होंने एक ऐसा इतिहास दर्ज किया है कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिता थे, अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इसके बाद जैसे ही इन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति भवन से, उसके बाद ये सीधे गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, उनको नमन किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सिर्फ एक लाइन का बयान दिया, कहा कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। तो क्या उस ओर उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया। कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। और उसके बाद एक से बढ़कर एक बयान इस प्रोग्राम में उन्होंने दिया है, उससे आपको अलग अलग खबरों में रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी सुन लीजिए। बट अबव ऑल, we have to bring to our district judiciary a sense of dignity, a sense of self-worth, a sense of confidence in their own respectability, which is why I always say that our district judiciary is not a subordinate judiciary. It is really the district judiciary which is equally important in the affairs of the nation's judiciary as in the High Court or the Supreme Court. The Supreme Court may lay down these big ticket judgments, as they called, important issues which are decided by the Supreme Court. But the district judiciary in those small cases, they define the peace, the happiness, tranquility, and faith of common citizens. The way we look at the district judiciary affects deeply our own personal liberty as citizens. If district judges do not have the confidence in their own abilities, in their own respect, in the hierarchical system, how would you expect a district judge to grant bail in an important case? It is very easy to have a general mantra in a criminal case. The offense is a heinous offense, therefore there shall be no bail. This is an offense involving murder. This is an offense involving rape, so there shall be no bail. But we know as judges, and you know as lawyers, that even within that category of cases where the offense is heinous, there may be a tendency to rope in somebody who is not exactly guilty. We also know that sometimes informants tend to over-exaggerate a first information report. Now, how do you sift those who may be guilty from those who may possibly not be guilty? That is the art of the district judge himself, and that is what the lawyers have to point out to the district judiciary. And it is when we do this common mission
the higher courts are getting flooded with bail applications. I've just taken a decision as Chief Justice of India that there are 2,000 bail applications pending in the Supreme Court, 3,000 transfer petitions pending in the Supreme Court, 5,000 out of the total pendency. So we decided at the full court meeting the other day that all benches of the Supreme Court will take 10 bail applications every single day. The idea being that we have 13 benches today. So 130 bail applications will be disposed of, 650 at the end of 1 week. Hopefully at the end of 4 weeks, we would have, of course, there will be fresh bail applications. But this turnover has to constantly be maintained of matters which are filed and matters which are disposed of. But the reason why the higher judiciary is getting flooded with bail applications is because of the reluctance of the grassroots to grant bail. And why are judges at the grassroots reluctant to grant bail? Not because they don't have the ability, not because the judges at the grassroots don't understand the crime. They probably understand the crime better than many of the higher court judges because they know what crime is at the grassroots in the districts. But there is a sense of fear that if I grant bail, will somebody target me tomorrow on the ground that I granted bail in a heinous case? This sense of fear, nobody talks about, but which we must confront. Because unless we do that, we are going to render our district courts toothless and our higher courts dysfunctional. One of your members from Varanasi just gave me a very beautiful statement written in Hindi this evening, that why is the High Court of Judicature at Allahabad flooded with bail applications? Should these applications not be considered by the district judiciary? But the reason for it is the culture of distrust which we have generated amongst ourselves. Why should we distrust any person who grants relief to a citizen? If you commit an error, surely that error is amenable to correction. And it's not that we in the Supreme Court never commit errors. As they always say, the Supreme Court is not final because it is right, but it is right because it is final. So the process of dispensing justice is so intrinsically human that we have to learn to trust our district judiciary. Because it is when we learn to trust our district judiciary that we will truly answer the needs of our common citizens who seek access to justice. सुन लिया आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा उन्होंने देश के युवा कानून मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में उठाया है। हालांकि किरण रिजिजू को इस प्रोग्राम में बोलने के लिए कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने यही कह दिया कि बहुत सारे जज जो है वो ट्रांसफर के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, हाई कोर्ट के जजों के पास घूमते रहते हैं, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ भी करके अपना दबाव बनाए रखना है, अपनी वही राजनीति करनी है, क्योंकि ये तो कॉलेजियम सिस्टम को भी खत्म करना चाहते हैं और अपने हाथ में जजों की नियुक्ति लेना चाहते हैं। कॉलेजियम सिफारिश भेजता रहता है और ये जजों की नियुक्ति तक नहीं करते हैं। तमाम तरीके की चीज़ें हैं इस बयान के सामने आने के बाद खड़ी हो गई हैं, उनसे धीरे धीरे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।